Good morning, class second. Class is your mathematics book, and yesterday we have started chapter 7th, jugs and mugs. What's the chapter's name? Jugs and mugs. So class, yesterday you have started this chapter, and this chapter you have learned about jugs and mugs. That you can use different type of jugs and mugs to measure any liquid material. Okay, which object are in liquid form. Okay, we can use many different type of shapes and sizes of glasses, cups, bottles, bucket. Okay, and also learn that how to measure them. Okay, how to find out their measurement. Okay, which object are in liquid form. So yesterday you have solved some questions. So the next thing is Sunaina and Jaspreet brought different vessels. Vessels means jar or drum or pot. Okay, from the kitchen. They had a jug, a glass, a mug, a pot, and a bowl. Okay, here there are two girls whose names are Sunaina and Jaspreet, and they brought different type of pots from the kitchen. Okay, they used jug, glass, mug, pot, and bowl. They filled each of these with a cup. Okay, here these girls filled all these 5 pots with a cup. Okay, with a cup of water. Okay, इन्होंने क्या किया, इन पांचों बर्तनों में कप का यूज करके सब में पानी फिल किया, वाटर फिल किया. ओके, so you have to find out, guess which vessel holds the least water from all these 5 vessels. Which vessel holds the least water? Least water means सबसे कम पानी. So firstly you can find out from the figure, from the vessel. Okay, and you can also do this experience by yourself to find out that which vessel holds or contains least water. सबसे कम पानी किसमें आएगा. So object which is in a small shape, which is very smaller, that contains least water, जो सबसे छोटा होगा उसी में सबसे कम पानी आएगा. So from all these vessels, this bowl is the smallest. सबसे छोटा है ना. So this contains the least water. सबसे कम पानी इसी बाउल में आएगा. Okay, so here we'll write bowl, B-O-W-L, bowl. Next thing is which vessel holds the most water from all these options, from all these vessels. Which vessels holds the most water, which contains the most water. इन सारे वेजल्स में से अगर सबसे ज़्यादा पानी आता है तो किस में हम लोग कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड आउट दैट दिस जग होल्ड्स द मोस्ट वाटर. सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, इस जग में आएगा. ओके, सो क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेजल्स फ्रॉम योर किचन. यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम. Count the number of cups of water each of them can hold. Okay, here in this experience you have to take different type of vessels from your kitchen. Okay, आपको अपने किचन से अलग अलग तरह के अलग अलग शेप और साइज के कुछ बर्तन लेने हैं. ठीक, and then you have to fill these vessels with the use of same cup. Okay, उन सारे जो वेजल्स हैं, सारे जो बर्तन हैं, उसमें आपको पानी फिल करना है, वाटर फिल करना है by using the same cup. एक ही कप का, सेम कप का यूज करके उसमें वाटर फिल करना है. ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट, काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड. उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि हर बर्तन में, जितना बर्तन भी आपने यूज़ किया वाटर को फिल करने में, तो सब में कितना कितना कप वाटर लगा. ठीक ना, कितने कप वाटर का यूज़ करके उस पॉट को, उस वेसल को हमने फिल किया. So you have to do this experience by yourself to find out the measurement of any object. Okay, first guess and then do it. You have to do just like this. Suppose that the vessel you used, here you will write that vessel's name that you used for this experience. Just like you can use bowl, glass, jug, pot. You can also use a cooker. Okay, and you can also use different type of objects, different type of vessels that you can see in the kitchen. And after that you have to find out that how much water contains that vessel. Okay, just like this, if I did this experience, I have to use 3 cups for filling a bowl, 3 cups for filling this glass,
10 cups for filling a jug and 15 cups for filling a pot. Okay, so clear class? You have to do this experience by yourself. Now next thing is, now here ring the one which holds the more water. Here you can see there are some pots, there are some vessels. You have to find out or circle that vessel which contains, which holds more water. जिसमें ज़्यादा पानी आता है उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है. एंड दैट वेसल विच इज़ इन बिग साइज, बिगर साइज कंटेन्स मोर वाटर. जो साइज में बड़ा होगा उसी में ना वाटर ज़्यादा आएगा. सो अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट. सो हियर you can see there is a bucket and there is a jug. So now tell me which contains more water. A bucket contains more or jug is more? Bucket na, so here you will circle this bucket. Next, there are again two vessels. One is a cup, second is a plate. So now tell me which contains more? Cup contains more or plate contains more? Cup na, so you will make a circle, okay, in this cup. Here there are two pots of different sizes, okay. You have to circle that pot which contains more water. So now tell me which contains more, the first one or the second one? First one na, because it is bigger in size, so you will make a circle in it. Here again there are two pots, okay. So now tell me which contains more water, the first one or the second one? Second one na, because it is bigger in size, so you will make a circle in this. So clear class, how to this question? By this experience you will find out the size, the shape of any vessel, okay, that which vessel contains less water and which vessel contains more water. Now this is done. Next is, now here there is a next experience. What is this? Rani and the milkman. Class, in your house every day a milkman comes to give your milk, yes or no? सबके घर में मिल्कमैन आता है ना, दूध वाला आता है ना दूध देने के लिए, in the morning time, in the evening time. So just like that, here there is a girl whose name is Rani, okay, and in her house there is a milkman. What's name it is? His name is Anil, is a milkman, okay. His name is Anil, he is a milkman, and he gives the same amount of milk at the Rani's house every day, okay. He gives milk same amount, just like 1 liter, 2 liter, half liter, okay, every day same amount, okay. He uses a mug 3 times to fill Rani's milk pot, okay. He uses 3 mug, okay. You can see here he uses 3 times of milk to fill milk pot, okay. जो रानी बर्तन लेकर के आती हैं उसको फिल करने के लिए जो दूध वाला है, मिल्कमैन है, वो 3 टाइम्स उसमें मिल्क फिल करता है और फिर उसके बर्तन में उसको डाल देता है. One day Rani's mother gave her a different pot to take milk, okay. One day what happened? Her mother gave her a different pot, okay. एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मा ने उसको दूसरा बर्तन दिया, ठीक है, दूध लेने के लिए दूसरा बर्तन दिया, ओके. एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप. डेली क्या होता था कि जो रानी बर्तन लेके जाती थी वो पूरा टॉप तक, पूरा ऊपर तक फिल हो जाता था, ठीक ना. बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली. लेकिन आज क्या हुआ, रानी ने क्या पाया कि जब वो दूसरा बर्तन लेके आई हैं तो जो वो उसका बर्तन है वो दूध पूरा ऊपर तक फिल नहीं हुआ है, वो थोड़ा नीचे ही है, ठीक ना. डेली क्या होता था कि दूध पूरा, मिल्क जो है पूरा ऊपर तक, टॉप तक पूरा फुल हो जाता था. लेकिन आज उसकी मम्मा ने दूसरा उसको पॉट दिया, ठीक, लेकिन वो पूरा फुल नहीं हुआ, ठीक ना. जैसे डेली होता था वैसा आज नहीं हुआ. ओह, टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क. सो हियर रानी थॉट दैट दिस मिल्कमैन, दिस अनिल गेव हर लेस मिल्क, ओके. रानी को क्या लगता है कि जो दूध वाला है उसको कम दूध दिया है, कम मिल्क दिया है, ओके. डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? नाउ क्लास, कैन यू टेल मी, इज अनिल चीट हर? नो, he is not cheater, okay. He didn't give less milk. Why? Because the shape of the size of the pots are different.
ओके जो पहले पॉट था वो अलग था और जो आज आया है पॉट, जो बर्तन आया है वो अलग है। ओके दोनों के साइज़ अलग हैं। जो पहले वाला होगा वो छोटा होगा थोड़ा, तभी ना ऊपर तक फिल हो जाता है, और जो वो आज लेके आई है वो थोड़ा बड़ा होगा साइज़ में, ठीक ना, तभी ना आप पूरा नहीं फिल हुआ है। उसने इसको चीट नहीं किया, ठीक ना, जो दूध वाला है उसने उसको चीट नहीं किया, ठीक ना, कम दूध नहीं लिया। इट इज़ हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ दैट पॉट। ओके द फर्स्ट वन इज स्मॉलर and the second one is bigger, that's why it will not filled fully. Okay now next thing is, how much milk does your mother buy every day? Here in this space you have to write that how much milk does your mother buy every day. आपकी मम्मा जो है डेली आपके लिए, आपके घर के लिए कितना दूध लेती हैं। ओके सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, you can write 1 liter, 2 liter, 1.5 liter. Okay now next thing is, try yourself. Take 5 different types of big vessels from your kitchen. Firstly you have to take 5 big vessels, 5 बड़े बड़े बर्तन आपको लेने हैं अपने किचन से। Fill all of them one by one with 1 jug full of water. उसके बाद क्या करना है, सारे जो 5 बर्तन है ना, 5 वेजल्स बड़े बड़े, उन सबको एक ही जग से, ठीक ना, जग एक ही यूज़ करना है और उस जग का यूज़ करके उस समय वाटर फिल करना है। What do you see and why? Okay so you have to do this experience, you have to find out that what happened and if it is happened how it. Okay ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हुआ, ठीक ना, और हुआ तो क्या हुआ, क्यों हुआ। Talk to your friends about it and you have to also talk about it with your friends. So clear class, you have to do this experience by yourself. So class, here I stop this chapter. Hope you all understood very well and also learned new things. It is a new thing for you now to find out the shape and size, the continuity of any vessel. Okay so class, I stop this chapter. We'll continue the next question in our next class. So it's enough for the day. Thank you.